video, I have some really pretty fusion wear and kurta sets and kurti options from W. So I recently went to W's store, and W के store पे I saw one thing that there were a lot of fusion wear pieces and सब कुछ इतना सुंदर था, and the colors which they have launched in this summer season, oh my god, like look at the color which I'm wearing today. इतने ज़्यादा fresh pieces थे, इतने ज़्यादा summery and cute and airy outfits थे, and the vibe it really resonated with my style. जब मैं थोड़ा bold और independent woman वाला style लेके जाना चाहती हूँ, whenever even I'm going to office, I just want to go for something which makes me look very classy and like I'm an independent woman and everything. And there were a lot of dresses and jumpsuits which I really loved. So you know, I got a lot of pieces from W. So I think without any further ado, we should start with the video. The first one which I'm wearing today, oh my god, like look at the color of this. इसका जो material है ना, it's like the softest ever material on this planet. Like I don't know what to call it. It's like a pure chiffon material which with such a pretty print all over the kurta. Now this is like an organza का kurta. Organza का जो उसका material है ना, उस पे पूरे पे से self print कर रखा है with light flowers and purples and whites and oh my god, pearl earrings with this look amazing. इसके अंदर एक inner आया है like a satiny inner जो इसी के matching का है, satiny pants, and pants के भी ना नीचे border में ऐसा same organza का material है which is really pretty. Like the whole vibe of this kurta screams summer and floral and cute pieces, and this is so me. Like this is so everybody, I feel like everybody loves to dress like this. And in this I bought the size 10, and इसका जो pattern है ना, just because I told you कि मैंने इसके अंदर size 10 लिया, which is like one size bigger for me, because I wanted to keep it like this only कि जो pattern है वो थोड़ा सा loose रहे and florally और airy रहे. And these kurtis, when you wear them, this is like a kurta set, proper kurta set, so when you wear these sort of sets, they make you look super classy, and oh my god, this is so comfortable to wear in. Now the next one which I have, this is not like a normal kurti or kurta set. This is something which resonates my style and is like very colorful. Such a nice bright and bold color. So it's this dress. Now look at the color. As I was saying, this is like a dark pink with orange ka mixture, which is such a different mix for me, because I would never think कि pink और orange को mix करा जा सकता है, and that too so seamlessly. And look at this. This is like a very nice full length dress. Now dresses in general, they are so comfortable. आपको नहीं सोचना what you want to wear it in bottom, and like a very simple oxidized jhumka or like a very simple gold hoop earrings will go very nicely with this, because इसके belt के अंदर there are some golden details. तो आप दोनों तरह का कुछ भी पहन सकते हो, whatever you feel like. And this belt, this like accentuates your waist बहुत अच्छे से, and this is like a very flowy, and the material is like a cotton and linen का mixture, which I really love. Perfect material for summers. And all in all, this has like whole bold vibe, like you are a boss lady. ऐसी वाली vibe है इसकी. I love this. The length is also perfect. Even though I'm a very tall person, the length is very perfect. And I'm styling all the pieces with all the footwear which I got from W itself. So basically the first one which I styled was with this matte golden. This is not like a shiny golden. This is like a matte golden color ka block heels. Now black block heels are super comfortable to wear, because you know you don't have to think कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना. If you have this one heel in your wardrobe, this will go with all your ethnic outfits, and I really mean it when I say this. And this is like a very small heel height, like a 2 inches or 1.5 inches, very comfortable to wear. I'm the size 39 for this, fits me perfectly, goes with almost all the outfits, and is very comfortable. Like ऐसा cushiony sole है इसका, and then the straps are also very comfortable. बिल्कुल भी सब marks नहीं दे देती आपके पैरों पे, and it's super nice, and the color goes very well with everything. Now moving on to the third one, which I'm super excited for. Oh my god, look at this pattern. Now look at the sleeves. इसका sleeves का ये जो embroidery is so pretty, and पूरी embroidery is like ना of different colors of threads, and उसके अलावा there's some golden thread as well. So all in all, it's such a nice pattern with a little bit of chikankari का lacy border at the end, which gives like a whole different vibe to this suit. And आगे से एकदम प्लेन है, बट नीचे देयर इज लाइक दिस बॉर्डर जो आपके स्लीव्स के अंदर है. तो इट्स लाइक अ वेरी प्लेन सा आगे से, बट इन द स्लीव्स एंड द बॉटम ऑफ द कुर्ता मेक्स इट लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड बहुत ज़्यादा फेस्टिव अप्रोप्रिएट लगा मुझे ये. एंड इसके अंदर ना देयर सम सेल्फ प्रिंट इन द कुर्ता इटसेल्फ. आपको इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, बट देन देयर दिस सेल्फ प्रिंट इन द कुर्ता विच मेक्स इट लुक मोर फेस्टिव अप्रोप्रिएट. एंड यू नो व्हाट, इसका पैंट और इसका दुपट्टा बहुत सुंदर है.
तो इसके पैंट्स अगेन सेम सेल्फ प्रिंट है एंड एट द बॉटम इसके अंदर भी वो जो दुपट्टे के अंदर मटेरियल है वो वाला है. नाउ आई विल शो यू द दुपट्टा. सो इसका दुपट्टा इज नॉट अ प्लेन दुपट्टा एट ऑल. इसके दुपट्टे में देयर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. इतना सारा फ्लोरल प्रिंट इज गोइंग ऑन एंड ये जो फ्लोरल प्रिंट है ना, दिस इज समथिंग which is like a very again bright floral print, and this one is a very nice raw silk and linen sort of material. This is like a pure linen or something, and ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है. इसमें साइड में वैसे थोड़ा थ्रेड वाला वो एम्ब्रॉयडरी है जो पूरे कुर्ते के स्लीव्स के अंदर था. All in all, this is such a nice dupatta to have. Like in general, this dupatta is something which will go with a lot of outfits, with a lot of kurtis you have, and looks amazing. I love suit sets because you do not have to think कि मैं बॉटम्स में क्या पहनूं, दुपट्टा कौन सा लगाऊं. लुक्स सो एलिगेंट, लुक्स सो क्लासी, लुक्स so fine. Abhi I have something which is very different. Like this is not a suit and this is not like a dress. It is a kaftan with pant ka set. Can you believe, like me wearing kaftans? I never thought ki Kirti will wear a kaftan back in 2022. But then when I saw this, oh my god, I could not stop myself and I bought this kaftan. Now the whole reason for which I bought this is because of the color. The color is such a fresh lime yellow color which I was like, I could not resist this, man. This is so pretty. And iska jo material, this is not like a plain cotton material. It's like a crushed, thoda sa wrinkled wala cotton material which looks so nice in summers. Like you look like a boss lady when you wear like a short kaftan with plazzos, and that I am like the most, I'm the best person ever. वो वाइब आ रही थी मुझे इससे. एंड इसका जो स्लीव्स है ना वो भी बहुत कंफर्टेबल है. सो इट इज़ सो एरी. एंड इसका वेस्ट को सिंच करने के लिए देयर इज सम इलास्टिकेटेड डिटेलिंग ऑन द साइड्स ऑफ द वेस्ट. तो ये बहुत ही डिफरेंट भी लगता है. एंड द काफ्तान इज वेरी शॉर्ट, बट देन द पैंट्स आर लाइक super big. So it looks like a skirt only जब आप इसको पहनते हो, which is a very nice thing. तो same material, same print. This color is so fresh. You can wear it with normal tank tops as well, and of course you can wear it together as well, and goes such nicely with the vibe. And summers में बहुत अच्छी लगती है. मतलब मुझे this kaftan set is something, if I'm going anywhere and I just want to wear something जिसमें मुझे गर्मी ना लगे, this is the first set which I'm going to pick for sure. Now moving on to the last clothing item, I have one thing which is again a footwear item. And W पे मैंने देखा ना बहुत सुंदर footwears थे. Like I तो just got block heels. वहाँ पे mules भी बहुत सुंदर थे जो मैंने पहले एक बार ले रखे थे, तो मैंने फिर से नहीं लिए. तो इन mules ना there were a lot of pearl वाले mules and embroidered mules and something detailing वाले mules. You can check out that as well. I have these. Now these are again black color की आगे से स्क्वायर टो वाली छोटी सी पेंसिल हील. अब इसकी जो हील हाइट है ना, इट्स लेस देन 1.5 इंच. तो दिस इज नॉट लाइक अ पेंसिल हील वाला अनकंफर्टेबल हील, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज सच अ स्मॉल हील हाइट. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि W की हील्स आर अमेजिंग. नाउ लुक एट द क्वालिटी ऑफ दिस. इसका यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रैप है ना, इसके ऊपर देयर इज अ लॉट ऑफ लाइमस्टोन एंड मोती, सिल्वर कलर का मोती का वर्क गोइंग ऑन ऑल ओवर दिस स्ट्रैप. I hope you can see. And then there is this black color का strap. So all in all, this looks very nice. Even with your western outfits, ये बहुत अच्छी लगने वाली है. With fusion, Indian, सारे outfits के साथ बहुत अच्छी लगने वाली है. And super comfortable too. Again, I'm in size 39 for this. Now last but not the least outfit which I have. This is like a blue and white color का शरारा set. Now again, shararas are something which are like ethnic, but then they are like in a completely different vibe again. So I have this sharara set. Now this is like a short kurti which came with the sharara. Now short kurti is with sharara. Oh my god, the OG combo, and looks so pretty. इसका जो print है ना, this is also very nice. This print is something, मतलब इस print के लिए मैं ऐसे follow जाती हूँ because दिस इज सो प्रिटी. लाइक ये ब्लू और ये जो वाइट होता है ना, दिस इंडिगो प्रिंट सॉर्ट ऑफ अ प्रिंट, ये बहुत सुंदर लगता है. एंड दिस इज लाइक दिस इज दैट प्रिंट जो कभी आउट फैशन नहीं होगा एंड विल ऑलवेज लुक वेरी नाइस. नाउ दिस शॉर्ट कुर्ती, दिस इज लाइक अ वेरी नाइस कॉटन, प्योर कॉटन मटेरियल. एक तो मटेरियल मुझे इतना अच्छा लगा है इन सब चीज़ों का. आई हैव जीरो कंप्लेंट्स. एंड मटेरियल इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन समर्स बिकॉज गर्मी नहीं लगनी है ना बिल्कुल भी. तो दैट्स वाई द मटेरियल ऑफ दिस इज वेरी कॉटनी. एंड आई हैव द सेम शरारा, लाइक ओवरऑल सही है, बट इसका शरारा का पैटर्न कुछ ऐसा है. लाइक इट्स वाइट अप टिल योर थाइज, एंड आफ्टर योर थाइज इसमें बहुत सुंदर अगेन ये ब्लू वाला प्रिंट है ऑल ओवर द बॉटम पार्ट. एंड इसका जो फ्लेयर है ना शरारा का, वो बहुत सुंदर है. आई थिंक इन द पाकिस्तानी वाइट वाला सूट एंड इन दिस सूट आई बॉट द साइज 10.
इन दोनों को छोड़ के तीनों आउटफिट्स के अंदर आई बॉट द साइज 8, so you can get a reference. Now this is again super cottony, super comfortable to wear and looks amazing. With the dupatta तो it's look more amazing because इसका दुपट्टा is of like a very different color. Now look at this दुपट्टा man. This is like of a, again blue color जिसका work था ना बिल्कुल वैसा वाला color, and again the print is the same only. तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर print है, and just because contrasting दुपट्टा है so it adds a lot of color to your outfit. तो वाइट बॉटम्स है, वाइट आपका कुर्ता है, शॉर्ट कुर्ता. सो दिस अगर आप इसको ऐसे खुला करके लगा के पहनोगे ना, दिस विल एड अ लॉट ऑफ कलर टू योर आउटफिट एंड बहुत सुंदर लगने वाला है. द प्रिंट इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग. अगेन सुपर कॉटनी, सच ए नाइस कुर्ता, लुक्स वेरी एलिगेंट. सो दीज वर फ्यू थिंग्स, 6 to 7 पीसेज विच आई गॉट फ्रॉम डब्ल्यू दिस टाइम. मैंने उनका ब्यूटी वाली चीज़ें भी ट्राई करी थी एंड आई लव्ड इट. उसका इफ यू वांट मैं अलग से एक हॉल बना दूंगी. बट दीज वर द फुटवेयर्स एंड फ्यूजन वेयर एंड ड्रेसेज एंड kurta sets and everything which I got in clothing items, and this was all about the video. All the links will be mentioned in the description box down below, आप वहाँ पे check कर सकते हो. And I've mentioned SKU number for all the products, so आपको easily मिल जाएंगे online उनकी website पे. And thank you so much for watching guys. If you like the video then please don't forget to give this video a big thumbs up and subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much for watching. Bye bye.